read and learn. Sky is so bright. Smart kids grow with moonlight. Read and learn, shine so bright. Smart kids grow with moonlight. eSchoolify series, fun and true. Learning dreams for me and you. Welcome to eSchoolify series. Assalamualaikum, Sayyida Maryam Naqvi is here from the Moonlight International Publishers. Respected parents, how are you? I hope you all are fine. Today, we have done in the class lowercase letter p, its formation, its vocabulary words, but at home, how you will teach? आप घर पे कैसे पढ़ाएंगी? Start from second line, come straight down, make some circle. It will make small p. The letter name is p and the sound of p is p. अब हमने यहाँ पर paint, pencils और parrot सिखाया. टेबल के ऊपर आप different kinds of plates रखेंगी और आप साथ साथ आपका बच्चा लिखेगा p, p, plate, p, p, plate. आप पेन भी रख सकती हैं. p, p, pen, p, p, pen. P is for parrot, p, p, parrot, pretty parrot. P is for pencils, p, p, pencils. P is for paint, p, p, paint. P is for plate, p, p, plate. After that, बच्चों से क्वेश्चन पूछेंगे कि यहाँ पर ट्रे में कलर्स कौन कौन से हैं. उसके बाद पैरट कैसा था, पैरट किसके पास बैठा था. ठीक है, कैसे पूछेंगे आप? क्वेश्चन यहाँ पे गिवन है. Where was the parrot sitting? The parrot was sitting by the paint and pencils. After that, यहाँ पे देखें रेड, ब्लू और येलो कलर है. इसके बारे में कैसे पूछेंगे आप? Name the colors of the paint in the given theme. इस तरह आपकी स्पोकन अच्छी होगी, बच्चे की अंडरस्टैंडिंग लेवल डेवलप होगा और आपको बच्चे के साथ घर पे भी काम करवाना आएगा. इसके साथ ही मरियम नकवी को इजाजत दें. शुक्रिया. अल्लाह हाफ़िज़. थैंक यू वेरी मच.